Hello my dear friends, I welcome you to the multiple choice question section of the 14th lecture. 12th standard का फिजिक्स का पहला लेसन चल रहा है, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, और उसके 14वें लेसन के साथ जुड़े हुए जो MCQs है उसके सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। वहाँ काम करना शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस से रिवीजन का काम शुरू करूंगा मैं। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस इज I0 is equal to IC plus mh square. Moment of inertia of a body about any given axis of rotation is equal to the sum of its mi about a parallel axis passing through the comb and the product of the mass and the square of the distance between the two parallel axes. इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं अभी। This can be written as m into k0 square is equal to m into kc square plus m into h square. Gets cancelled. K0 square is equal to kc square plus h square. K0 is the radius of gyration. K0 is the radius of gyration about any axis. Kc is the radius of gyration about the comb, and h is the distance between the two parallel axes. इसी समझदारी के साथ और जानकारी के साथ शुरू करते हैं पहला सवाल। The radius of gyration of a body about an axis at a distance of 4 cm from the center of gravity, h is equal to 4 cm from the center of gravity. वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन है 5 सेंटीमीटर, k0 is equal to 5 सेंटीमीटर. ओके फाइन। पूछा क्या गया है? Then the radius of gyration about a parallel axis through the center of gravity, kc is equal to how much? अब आप समझ चुके होंगे कि ये मैंने क्यों निकाला है। यहाँ पे अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने की देरी है, आंसर आ जाएगा। इस रिजल्ट को मैं लिखूंगा kc square is equal to k0 square minus h square, that is 5 square minus 4 square, that is 25 minus 16, that is 9. kc square is equal to 9, kc is equal to 3 centimeter. The answer of the first question is C, 3 सेंटीमीटर. दूसरा सवाल बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। Radius of gyration of a body about an axis is 12 centimeter. Radius of gyration of the same body about a parallel axis passing through the center of gravity is 13 centimeter. Then the perpendicular distance between the two axes is how much? So simple. They have given center of gravity से जाने वाला kc is equal to 13, k0 is equal to 12, h is equal to how much? यहाँ से आएगा उभर कर इक्वेशन h square is equal to ये k0 और ये kc. h square is equal to k0 square minus kc square, 13 square minus 12 square, that is 169 minus 144, that is 25. h is equal to 5. h is equal to 5. जवाब ए, फर्स्ट ऑप्शन। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन। Moment of inertia of a circular disc about its diameter is 500. Circular disc about the diameter is mr square by, circular disc about the diameter is mr square by 4 is 500. mr square is 2000. Okay, सवाल क्या है? If its radius is 2, find the radius of gyration. Okay, if the radius is 2, what will be the radius of gyration? Radius of gyration कितना होता है? तो mr square by 4 is equal to mk square. This gets cancelled. K is equal to r by 2. इसका कोई मतलब नहीं बनता है अभी। K is equal to r by 2, that is 2 upon 1. ये डेटा गुमराह करने के लिए दिया गया था।
The answer is 1. K is equal to 1. What is the answer? A, first option. आज सभी न्यूमेरिकल्स के बारे में बात हो रही है, यह भी समझने की कोशिश हो रही है कि कुछ डेटा जो एक्सेस दिया जाता है गुमराह करने के लिए, उसको एलिमिनेट क्यों करना है और कैसे करना है. चौथा सवाल. The radius of a solid sphere is 40 centimeter. The radius of a solid sphere is 40 centimeter. The radius of gyration K about the tangent, K about the tangent कितना आएगा? So moment of inertia about the tangent आता है solid sphere का 7/5 mr square is equal to mk square. This gets cancelled. R is equal to, या K is equal to root of 7/5 into R, that is root of 7/5 into 40, that is K. That is K. इसको root 7 into 40 into root 5 upon root 5 into root 5 करेंगे, ये हो जाएगा 40 into root of 35 upon 5 is K. 8 root 35 is K. चौथे सवाल का जवाब है 8 root 35, which is C, third option, which is C, third option. पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5. Radius of gyration of a disc of mass 100 gram, that is 0.1 kg, and radius 5 centimeter, radius 5 centimeter, radius of gyration of a disc of mass 100 grams and radius 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर है भाई, ये केजी में है तो इसको भी ग्राम में लिख देते हैं, टेंशन नहीं चाहिए, एक ही सिस्टम में रखते हैं. ठीक है. About an axis and radius 5 centimeter about an axis passing through the center of gravity and perpendicular to the plane. डिस्क है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये है, यहाँ का आएगा mr स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल टू mk स्क्वायर. आर ढूंढना है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढना है. सो k इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2, दैट इज आंसर इज 5 अपॉन रूट 2. 5 अपॉन रूट 2 उन्होंने वैल्यू के टर्म्स में दिया है, सो 5 अपॉन रूट 2 3.6 या 3.54. ओके, 3.54 सेंटीमीटर. यहां भी मास की आवश्यकता नहीं है. द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. सवाल नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about its geometrical axis is I. ये नॉर्मल geometrical axis होता है, यहाँ पे this is I, which is we know it is mr square. Then moment of inertia about the diameter will be how much? About the diameter will be mr square upon 2, but mr square is I, so it is I upon 2. So it is I upon 2. That's right. The answer is B, second option. The answer is B, second option. सातवें सवाल के बारे में बात करेंगे अभी. मैं देख लूं पहले कहा, हाँ मिल गया. सातवां सवाल. If a solid sphere of mass 500 grams, mass है 500 grams which is 0.5 kg, mass 500, rolls with a velocity of 20 centimeter per second, 0.2 meter per second, rolls with a velocity of 20 centimeter per second, then the rolling kinetic energy is how much? So kinetic energy is half I omega square plus half mv square. Half of solid sphere है बच्चों 2/5 mr square into omega square plus half of mv square. 2 gets cancelled. 1/5 mv square plus 1/2
mv square 7/10 mv square 7/10 इंटू 0.5 इंटू 0.2 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7। मेरा जवाब है 0.014 जूल। 0.014 जूल है क्या ऑप्शन? यस इट इज। द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। सवाल नंबर 8, 8 क्वेश्चन। If I is the moment of inertia of a solid sphere about an axis parallel to the diameter of the sphere at a distance of x, which of the following graph represents variation of I with x at a distance of x? Moment of inertia parallel axis, तो क्या आएगा? Moment of inertia नया will be equal to I plus m into x square. Okay, मुझे किसके और x और इसमें का रिलेशन चाहिए. So obviously the graph will be something like this. Okay, that is on the x axis it is, this is x and this is I. The new I will be I plus mx square. ये this is what we call as a parabola, displaced parabola because of this I factor. This is principle of parallel axis. जवाब कौन सा है? जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। सवाल नंबर 9, 9th क्वेश्चन। इफ अ सर्कुलर लूप, नहीं ये नहीं, 9th अलग है। इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, मास 1 kg and radius 3 centimeter, mass 1 kg and radius 3 centimeter is rotating about an axis passing through the center with omega 50 rads per second, omega 50 rads per second, then kinetic energy of rotation, kinetic energy is half of I omega square. सॉलिड स्फीयर है ना बच्चों? क्या है? सॉलिड स्फीयर है, तो ये आएगा 2/5 mr square omega square. This gets cancelled. 1/5 3 into 10 raised to minus 2 cos square into 1 into 50 cos square, 9 into 10 raised to minus 4 into 2500 upon 50. This is 5 the 100, 9 5 the 45 into 10 raised to the power minus 2. मेरा आंसर आ रहा है 0.45 is nothing but 9/20. 9/20. 9/20. ए ऑप्शन है शायद 9/20. यस, और हम आ चुके हैं आज के आखिरी सवाल तक। सभी न्यूमेरिकल्स है। A ring rotates without slipping on a horizontal surface. The ratio of translational to total kinetic energy. Ring है भाई। 10th, ratio of translational to total. Okay, kinetic energy tra upon kinetic energy tot is equal to half of mv square upon half of mv square plus half of I omega square. That is equal to half of mv square upon half of mv square plus half of I is how much? It is m r square omega square, क्योंकि रिंग है ये। half of mv square upon half of mv square plus half of mv square. This is equal to half of mv square upon mv square. ये कट हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा हाफ। है क्या? Yes, the answer is B, second option. The answer is B, second option. ये रिवीजन है। पहला सवाल उसका जवाब, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का जवाब, चौथा ये आ गया यहाँ पे पांचवा सवाल उसका जवाब, ये आ गया इधर छठा सवाल उसका जवाब,
ये यहाँ पे 7th क्वेश्चन का आंसर, ये 8th, ये हुआ 9th और ये हुआ 10th। सो दसों न्यूमेरिकल के जवाब वो कैसे आए, उनके एनालिसिस, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको इनमें कोई दिक्कत ना आई हो। अगर है तो और प्रैक्टिस कीजिएगा। रुक जाएंगे, कल वापस कुछ और सवालों के साथ, उनके जवाबों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।